حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع 4 لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. Narrated Ubaid bin Jurayj. I asked Abdullah bin Omar, O Abu Abdurrahman, I saw you doing 4 things which I never saw being done by any one of you companions. Abdullah bin Omar said, What are those, O Ibn Jurayj? I said, I never saw you touching any corner of the Kaaba except these 2 facing South Yemen, and I saw you wearing shoes made of ant leather and dyeing your hair with henna, a kind of red dye. I also noticed that whenever you were in Mecca, the people assumed ihram on seeing the new moon crescent, first of Dhul Hijjah, while you did not assume the ihram. Ihram is also called ihlal, which means loud calling, because a mahrim has to recite talbiyah aloud while assuming the state of ihram till the 8th of Dhul Hijjah, day of Tarwiyah. Abdullah replied regarding the corners of Kaaba, I never saw Allah's Messenger, peace be upon him, touching except those facing South Yemen, and regarding the tanned leather shoes, no doubt I saw Allah's Messenger, peace be upon him, wearing non-hairy shoes, and he used to perform ablution while wearing the shoes. For example, wash his feet and then put on the shoes. So I love to wear similar shoes. And about the dyeing of hair with henna, no doubt I saw Allah's Messenger, peace be upon him, dyeing his hair with it. And that is why I like to dye my hair with it. Regarding Ihlal, I did not see Allah's Messenger, peace be upon him, assuming Ihlal. Then he set out for Hajj on the 8th of Dhul Hijjah. अबैदुल्ला बिन जरीद से नकल करते हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर से कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मैंने तुम्हें 4 ऐसे काम करते हुए देखा है जिन्हें तुम्हारे साथियों को करते हुए नहीं देखा। वो कहने लगे, ए इब्ने जरीद, वो क्या है? इब्ने जरीद ने कहा कि मैंने तुआफ के वक़्त आपको देखा कि 2 यमनी रुकनों के सिवा किसी और रुकन को आप नहीं छूते हो। दूसरे मैंने आपको बस्ती जूते पहने हुए देखा, और तीसरे मैंने देखा कि आप ज़र्द रंग इस्तेमाल करते हो, और चौथी बात मैंने ये देखी कि जब आप मक्का में थे लोग जिल हज का चांद देखकर लब्बैक पुकारने लगते हैं और हज का एहराम बांध लेते हैं, और आप 8वीं तारीख तक एहराम नहीं बांधते।
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि दूसरे अरकानों को तो मैं यूं नहीं छूता कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमनी रुकनों के अलावा किसी और रुकन को छूते हुए नहीं देखा। और रही जूते तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जूते पहने हुए देखा कि जिनके चमड़े पर बाल नहीं थे, और आप इन्हीं को पहने पहने वुजू फरमाया करते थे, तो मैं भी इन्हीं को पहनना पसंद करता हूँ। और जर्द रंग की बात यह है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्द रंग रंगते हुए देखा है, तो मैं भी इसी रंग से रंगना पसंद करता हूँ। और एहराम बांधने का मामला ये है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त तक एहराम बांधते हुए नहीं देखा जब तक आपकी ऊँटनी आपको ले कर ना चल पड़ती। حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. Narrated Atiyah that the Prophet, peace be upon him, at the time of washing his deceased daughter, had said to them, "Start from the right side, beginning with those parts which are washed in ablution." उम्मे अतिया से रवायत करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मरहूमा साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को गुस्ल देने के वक्त फरमाया था कि गुस्ल दाहिनी तरफ से दो और अज़ाए वुजू से गुस्ल करने की इब्तिदा कर।